Hello and good day dear students, I'm Precis Malik. Welcome you one more time on online video lecture for today. Topic for today is Precis writing comprehension and Precis writing. These are the two most important skills for students because they train them not only with the reading skill but also with the writing skill. So there is a combination of reading comprehension and Precis writing, that there are questions in comprehension questions to write the Precis of the above given passage. So these two, reading comprehension and Precis writing, they are closely related to each other. Similarity between the two is that they are both based on the comprehension or the complete understanding of the passage. As usual, first of all, I would love to go with the concept of Precis writing, and in one line I would love to say Precis writing is an exercise in compression. Compression means to squeeze, to minimize, to reduce in size. So if you are dealing with Precis writing, keep concept number one in your mind, that you have to reduce the text, you have to minimize the text, you have to shorten the text, and that is the quality of the Precis writing, and that is the demand of the passage given to you for Precis writing exercises. The word Precis is derived from French, that means a summary, and we have already discussed in summarizing that summary is a short form, summary is a brief form. Next, Precis writing means the art of summarizing, means being brief. So if you are asked to write a Precis, basically you are asked to write the summary, which is about the key points. Next is, a Precis is an essence of main ideas of the text or the passage in as few words as possible. So this indicates that Precis is done with minimum possible words. Its language is clear, simple, having continuity of thought and expression. So remember, Precis is chain of ideas. Like every good writing, Precis needs to have cohesion and coherence in it. Again, summing up this whole concept, I would love to say Precis writing is a precise writing, and precise means short, limited, brief, reduced. So I hope I have made the concept of Precis clear to you, that it is a compressed form of writing, it is brief form of writing, and it is precise form of writing. Now we move to the definition of Precis writing. According to Cambridge Dictionary, Precis is a short form of the text which briefly gives only the important points. This is very important, so you have to keep three key points in your mind while you are dealing with Precis writing. Number one, it is short, brief, precise, reduced, limited, minimized writing. So you have to squeeze, you have to shorten, you have to brief, you have to precise, shorten the size of the actual passage which is given for Precis writing. Number two, you have to deal with key points, main points, and important points only. So that means you do not have to include every idea that is there given in the passage, but only take the key idea, the main idea, or the important points or ideas only. 3. No extra and unnecessary points or details. For Precis writing, keep in mind that brevity can be done, that preciseness can be done, that shortening the text can be done by excluding the unnecessary points, by removing the unnecessary points, by not including the unnecessary points. So if you do not include the unnecessary and include the necessary only, then you easily get the precise or the short form of the text, which is called Precis writing. Next, I would love to talk about some basic qualities of a good Precis. Number one is conciseness. Yes, size does matter. Over here you have to keep in mind, say all that needs to be said and no more, no less. This is very important, that you have to be concise with what is required in the Precis, what is key point, what is main point, and it can be also done with my next explanation point, which is avoid unnecessary points. So if you take only the key points, you get the necessary points, and the other can easily be excluded or removed or not included in the Precis writing. Number two is clarity.
A Precis should be clear in all respects, the ideas, the points, the chain, the cohesion, the coherence. So there should be a clarity in the Precis writing. Third is correctness. A Precis should be correct in all respects. Avoid all possible error. There can be conceptual error, the errors of ideas, the errors of spellings and grammar, the errors of punctuation. So you have to avoid all the possible errors, and then you can get the correct form of the text or the Precis. Next is a Precis should be objective in all respect. Avoid personal bias. There should be no liking and disliking. Be objective. You don't have to be subjective. You don't have to give explanations and details. Next is coherence, which means the logic and clear interconnection of ideas in a written piece of work. Yes, when you get a passage, naturally there is a chain of ideas in it. There is a connection of ideas from 1, 2, 3, 4, 5 from beginning, which is introduction, then the body or explanation, and number 3, the conclusion. The writers start from one point and they end at the other. So you have to find out that interconnection of ideas, and you have to present the same interconnection of ideas in your Precis writing, in your solution of the Precis answer. Finally, completeness. A Precis should be complete in all respect. You should not leave any key point from beginning to the end, from line 1 to line last, from sentence 1 to sentence last. Take every sentence which is important from start to the end, from beginning to the end, and complete your writing. Do not leave the Precis in the middle, or do not leave the Precis without giving it a conclusion. And the best quality, the golden rule for Precis writing is use as few words as possible. So you have to be an expert in economy of words. It means only the needed words. Do not give more words. The more words are not the requirement. Brevity, as Shakespeare says, is the soul of wit. Next, here is a structural view of Precis writing. If you are a Precis writer, keep this sketch in your mind that you have to minimize, you have to reduce, you have to shorten the text. If the original paragraph or the passage contains 90 words, then your Precis should be in 30 words. Talking about the size of the Precis, this is very important. Keep in mind, a Precis is generally 33% or 1/3 of the original text. Remember, you can add or miss few words. Next, I'll be talking about 4 strategies of Precis writing. Number 1, make 3 parts of the passage, and this is one of the most important technique which I used in reading comprehension as well. They divide the passage into 3 parts, which are introduction, body, and conclusion. Number 2, count part 1 and part 3 only, exclude part 2. So body explanation part, which is part number 2, it contains the details, the data, the graphs, the examples, the reference, the quotations to explain the point. So you can exclude second point or the second part, and you can include part 1 and 3. You can easily get 1/3 of the original paragraph, or you can get 1 Precis. Number 3 is remove examples which are there in the original text, remove charts, remove diagrams, remove quotations and references, and material which is sporting material that should not be included in Precis writing. Final and the 4th strategy is to count and rewrite key points only, leave sub points and details. So you do not have to include every point. Like I have already said, include only the key points and keep a very good eye on the ideas, difference between the main idea and the sub idea, between the idea and the detail or explanation. Next, I would be talking about the 4 steps of a Precis writing. Step 1 is read the text. This takes us back to reading comprehension as well, because unless you read the text, you cannot write the Precis. Number 2, get and put ideas in order. Get the key ideas, get the main ideas, and then put them in the order. And remember, the order should be that is given in the original paragraph or the passage. Do not make your personal order. Do not change the place of the ideas. If idea 1 is 1, it should be 1 in your Precis. Idea 2 should be 2 in your Precis. Idea 4 should be 4 in your Precis. Step 3 is write Precis. Once you get the ideas, now put them on your paper, write them, do the exercise of drafting, and finally
the fourth step is to revise and submit your Precis. By revision, I mean to do the editing and the proofreading, check whether the necessary is included and the unnecessary is left there. And number two, any possible errors of grammar, spelling, punctuation, sentence cohesion and coherence, or the structure of sentences, or the tenses is made, you have to make your Precis writing error-free, revise it and submit your Precis. Next, let's look some of the do's and don'ts of Precis writing. There are some conditions for doing good Precis and there are some conditions for avoiding bad Precis. Number one is do read and understand the passage. Number two, do get the key ideas. Number three, do remove unnecessary details. Number four is do keep yourself precise, short and brief. And final, number fifth do is use simple and clear language. The don'ts are: don't add any ideas or comments from your side. Number two, don't be biased. Number three, don't add details or explanations or charts and diagrams and references and quotations and examples in your Precis writing. Number four, don't include unnecessary ideas or the sub ideas or which are not the main or key idea. Finally, number five, do not use figurative language and abbreviations. Don't use short forms. If you follow the do's and don'ts, you can easily remove problems, issues from your attempt of writing a Precis. And there are certain rules to make good Precis, and I have included only the 10. Let's read them and understand them. Number one, read the original passage completely and attentively. You do not have to just survey the text. Read it completely and attentively. Number two, select a suitable title, and like I've already suggested, focus on part 1 and 3. You can easily get a suitable title for your Precis, and that helps you to focus on the ideas because the title gives you a link to relate ideas to that topic. Number three, pick out and underline the important points or ideas. Once you're reading, underline the important ideas. Number four, arrange the points into a connected, readable whole, coherence of ideas. Number five, prepare an outline Precis of the passage by including the necessary and excluding the unnecessary. Number six, avoid repetition of the same idea. Number seven, use your own language for the Precis. Do not just copy and paste. Number eight, keep in mind that you do not add any comments from your own side. No addition. This is what we have done in reading comprehension as well. Do not go outside the passage. Live within the passage. Number nine, avoid figurative, literary language and abbreviation. These are very important and essential points. Finally, number 10, be short and exact. Do not miss the key points. So this was all about how to deal with Precis. Finally, in this video, I would love to show the model Precis. Here is the model passage. You can read it. The passage contains 212 words in it, and I have done the Precis in 73 words, which is almost 1/3 or 33% of the original passage. Read it easily, read it slowly, try to understand what I have included, try to understand what I have not included, try to understand what is necessary to be included and what is unnecessary to be left. So I have also given some possible titles at the end so that you can have this idea. Like I said in instruction, take a title which helps you to focus on the main idea. So this was all about Precis writing, and I hope you understand this concept now, and you with practice you can become a perfect Precis writer. Thank you so very much. तो आज हम बात करते हैं Precis writing की, जो कि comprehension की तरह बहुत ही अहम है क्योंकि दोनों हमें रीडिंग और राइटिंग स्किल में मदद करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि Precis का कॉन्सेप्ट क्या है। जी हाँ, Precis का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक महदूद, कम से कम अल्फाज में, मुख्तसर तरीन अल्फाज में एक पैसेज को दोहरा देना होता है।
इसका लफ्ज़ फ्रांसीसी ज़ुबान से लिया गया है जिसका मतलब खुलासा या निचोड़ होता है, और जब हम खुलासा या निचोड़ लिखते हैं तो यकीनन हमें मुख्तसर होना पड़ता है। इसे इख्तसार नवीसी भी हम उर्दू में कहते हैं। प्रेसी करते हुए सिर्फ आपको मेन आइडियाज़ पर फोकस करना होता है और उन्हें ही दोबारा लिख कर पेश करना होता है। और एक अच्छे प्रेसी राइटर की निशानी ये होती है कि कम से कम अल्फाज में, बिल्कुल वाज़ेह ज़ुबान में, सादा अंदाज में और ख़यालात की तरतीब को जहन में रखते हुए वो प्रेसी लिखता है, और प्रेसी को हम कहते हैं इख्तसार नवीसी या मुख्तसर नवीसी। प्रेसी की डेफिनेशन देखें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी हमें ये बताती है कि ये मुख्तसर शक्ल होती है किसी भी असल टेक्स्ट की जिसमें तमाम अहम हिस्से शामिल किए जाते हैं और गैर ज़रूरी हिस्सों को छोड़ दिया जाता है। 3 नुकात अहम होते हैं। सबसे पहले आपको इख्तसार यानी मुख्तसर होना पड़ता है, दूसरे में आपको सिर्फ की पॉइंट्स आइडियाज़ पर नज़र रखनी होती है, और तीसरे में आपको गैर ज़रूरी ख्यालात से गुरेज करना होता है। अच्छी प्रेसी की खसूसियात में सबसे पहले इख्तसार होता है, आपको मुख्तसर रहना होता है, इसलिए गैर ज़रूरी ख्यालात को शामिल ना करें। जितने ख्यालात ज़रूरत हैं उतने ही लिखें, ना कम ना ज़्यादा। फिर उसके बाद आपकी प्रेसी में बिल्कुल क्लैरिटी, वाज़ेह होनी चाहिए चीज़, कोई पेचीदगी नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर आपको गलतियों से पाक होना चाहिए, किसी भी किस्म की, चाहे वो स्पेलिंग्स की गलती हैं, चाहे वो ग्रामर की गलतियां हैं, चाहे वो जुमलों की साख की गलती हैं, चाहे वो टेंसेस की गलतियां हैं, चाहे पंक्चुएशन की गलतियां हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चों, और ऑब्जेक्टिविटी यानी आपको मारूजी रहना पड़ता है, आपको सब्जेक्टिव नहीं होना पड़ता, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं देनी पड़ती और अपनी ज़ाती राय को भी शामिल नहीं करना पड़ता। नंबर 5, कोहेरेंस, जो ख्यालात बयान किए जाते हैं उनकी तरतीब, उनका ताल्लुक बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा असल पैसेज में था, और आखिर में मुकम्मल होना चाहिए प्रेसी को, कोई अहम बात छोड़नी नहीं चाहिए। सबसे बड़ा गुर ये है कि कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए, यही महारत को जाहिर करती है। फिर हमने साख्ती जायज़ा लिया, देखा कि अगर असल पैराग्राफ के अंदर 90 अल्फाज हैं तो प्रेसी में 30 अल्फाज होना चाहिए। इससे हमें साइज़ का अंदाज़ा होता है कि कोई भी प्रेसी असल टेक्स्ट का तीसरा हिस्सा 1/3 होता है या 33% हम उसे कह सकते हैं, तो आपको 1/3 यानी तीसरा हिस्सा लेना होता है। फिर हमने 4 स्ट्रेटजीज की बात की। पहली, आप पैराग्राफ के 3 हिस्से बना लें जो हमने रीडिंग कॉम्पिटिशन में किया था। तारुफ का पैरा होता है, इख्तितामी और दरमियान में वजाहत या बॉडी पैराग्राफ होता है। नंबर 2 पे हम कह रहे हैं कि आप पहला और तीसरा हिस्सा शामिल कर लें तो आपको आसानी से प्रेसी मिल जाएगी, और दूसरे हिस्से को आप छोड़ दें। तीसरे पे आप अगर उसमें शामिल पैसेज में शामिल मिसालों को, चार्ट्स को, डायग्राम्स को, कोटेशंस को, हवाला जात को निकाल दें तो फिर भी आप आसानी से मुख्तसर कर सकते हैं और प्रेसी लिख सकते हैं। चौथी बात यह है कि आप कोशिश करें कि आप जान सकें कि तमाम अहम पॉइंट शामिल हो गए थे और गैर ज़रूरी पॉइंट और तफसीलात को आपने छोड़ दिया हुआ है। 4 स्टेप होते हैं प्रेसी राइटिंग के। पहला स्टेप ये है कि अच्छे तरीके से, तवज्जो से और मुकम्मल तौर पर आप रीडिंग करें। स्टेप 2 में आपने अहम ख्यालात को निकालना है उसमें से और फिर उन्हें उसी तरतीब में रखना है जिस तरतीब से वो पैराग्राफ में शामिल थे। तीसरे स्टेप में आपने प्रेसी को लिख लेना है अब कागज़ के ऊपर, और चौथे स्टेप में रिवाइज़ करना है यानी गलतियों से पाक करना है, उसमें आइडियाज़ का ताल्लुक देखना है, और इस तरह से आखिर में आपने अपनी प्रेसी को मुकम्मल और बेहतरीन बनाकर पेश कर देना है। फिर हमने कुछ डूज़ और डोंट्स देखे। हमने देखा कि आपने पढ़ना है, ये लाजिम होता है, मेन आइडियाज़ आपने लेने होते हैं, ये लाजिम होता है, गैर ज़रूरी तफसीलात को आपने ख़त्म करना होता है, ये लाजिम होता है, आपने मुख्तसर रहना होता है, ये लाजिम है, सादा और वाज़ेह ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, ये लाजिम होता है। जो नहीं करना, अपनी तरफ से ख़यालात और कमेंट्स नहीं शामिल करने, अपनी पसंद नापसंद बायस नहीं होना, आपने तफसीलात नहीं लिखनी, इसमें आपने गैर ज़रूरी ख़यालात को शामिल नहीं करना, और आपने किसी किस्म की फिगरेटिव लैंग्वेज या इख्तसार के अल्फाज नहीं लिखने हैं, मुख्तसर अल्फाज नहीं लिखने हैं। फिर हमने अच्छी प्रेसी के कुछ उसूल देखे। आपको मुकम्मल तौर पर और पूरी तवज्जो से पैसेज पढ़ना चाहिए। नंबर 2, टाइटल पहले निकाल लें ताकि आपको अहम तरीन ख्यालात का पता चल जाए और उसके मुताबिक आप ख्यालात को, अहम को एक तरफ और गैर अहम को एक तरफ करते जाएं। नंबर 3 पर आपने आइडियाज़ पढ़ते हुए अहम आइडियाज़ को अंडरलाइन कर लेना है। नंबर 4 पर आपने तरतीब का ख्याल रखना है, शुरू से आखिर तक जैसे ख्यालात बयान किए गए हैं वैसे ही आपकी प्रेसी में शामिल हों। नंबर 5 पर आपने ये करना है कि एक आउटलाइन खाका बना लें कि अहम और गैर अहम को अलग कर लें। नंबर 6 पे एक ही ख्याल को बार बार नहीं लिखना, रेपिटेशन से बचना है। नंबर 7 पर
आपने अपनी ज़ुबान में लिखना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना। नंबर 8 पे हमने कहा था कि आपने जहन में रखना है कि आप अपनी तरफ से कोई बात शामिल न करें। नंबर 9 पे हम कहते हैं कि आपने फिगरेटिव, अदबी, बहुत ज़्यादा तख्लीकी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी, बहुत ज़्यादा पेचीदा मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी। और 10 पे हम और आखिरी में हम ये कह रहे हैं कि आपने मुख्तसर और टू द पॉइंट रहना है और किसी अहम ख्याल को आपने नज़रअंदाज या मिस नहीं करना है। आखिर में आपको मॉडल पैराग्राफ दिखाया गया जिसमें मॉडल प्रेसी हल करके दिखाई गई। असल पैसेज में 212 अल्फाज थे जिनकी प्रेसी 73 अल्फाज में की गई। प्रेसी को भी आप देख सकते हैं और जान सकते हैं क्या अहम तरीन ख्यालात थे उन्हें शामिल किया गया और क्या गैर अहम ख्यालात थे जिन्हें खारिज कर दिया गया। आखिर में मैंने मुमकिन टाइटल्स भी दे दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से इसका हल करना होता है, क्योंकि इम्तिहानी सवालात में भी यही आता है कि प्रेसी भी करें और मुमकिन टाइटल्स भी लिखें। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए मुफीद होगा, मालूमात से भरपूर होगा। ये बड़ी मुश्किल चीज़ है प्रेसी राइटिंग, इसमें काफ़ी वक्त चाहिए होता है, तो आपने मुसलसल मेहनत करनी है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको परफेक्शन मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच।